Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, we had revised about the institutional and technological reforms in the agriculture sector, and in that we have learned that with first 5-year plan, the government focused on the improvement in the agriculture sector. But still, 1960s and 1970s, the result were not satisfactory. So after 1980s and 1990s, the government started some land development program, and according to that, the government adopted some institutional and some technological reforms in the agriculture sector. So if we talk about the institutional reforms, like कि जो crop insurance है, means the government provided the service, the facilities of crop insurance. And the second thing in that, we have learned about the Gramin Bank. Okay, the Gramin Bank also opened in the villages. And the next thing, KCC means Kisan Credit Card, PACE, and MSP. We learnt about these terms in the last lecture. And if we talk about the technological reforms, then in that the government provided the bulletin services means bulletin regarding to weather. And the next thing, the agriculture program also, with the help the government can aware the farmers means related to a particular crop or means production. And the second thing, the farmers they can means aware about the crop production or crop season or the weather with the help of radio and the televisions. And in the last, we have learned about the Bhudan and Gramdan movement, and in that the people initiated to distribute their land or their villages, means जो big landlord थे, जो जमींदार थे, they distributed their land and their villages to the landless farmers now. So all these things we have discussed in the last lecture. So today we will start our next topic, that what is the contribution of agriculture sector in the national economy, or you can say in the GDP, or you can say in the Indian economy. So if we talk about this, so please recall the things that we learned in the second chapter of economics. In the second chapter of economics, means sector of economy, when we learned, and in that we have learned three sectors now: primary, secondary, and tertiary. And in that we learned that the primary sector means agriculture sector share is less in the GDP, but it employed more people in comparison to other sectors. Okay, so with that topic we will start our today's heading. So today's heading, contribution of agriculture to the national economy. Okay, and suppose key so before starting this, we can say that our agriculture or our farming is the backbone of our economy. Why we say this thing that it is the backbone of our economy? Because it employed more than half population of our country, means near about 52 or 53 percentage of our population employed by the agriculture sector. They are busy in the farming. Okay, so that is why we can say that agriculture or our farming is the backbone of our economy. Now the reality, the thing is this, that if we talk about the share in the GDP, then it is decreasing. Okay, means whose share? Agriculture share in the GDP, it is decreasing since 1950 onwards. And the next thing, share in employment, and if we talk about the share in employment, it is increasing. Okay, now if we talk about the 2001, so in 2001 63% population were busy in the agriculture. And now if we talk about at the present time, now also 53 or 54% of our population were employed by the means are employed by the agriculture sector. So now compare this situation with the life example. Suppose in a family 10 members are there, and all are busy in the working, and still they are earning 10,000 rupees only. And in the another family there are 2 person only, they are busy, they are working, and they earning 30,000, means less member and more income. And here more member and less income. So problem is here na. So we have to improve, we have to find out the reasons that why they are below. Okay, so at the same way in our country also the situation is there, that in agriculture more people are busy, means more employment is there, and they are earning less, means
their contribution in the GDP is less. So problem I think is there in the agriculture sector. So it is the matter of concern now. So to means to remove these problems, or to for the growth of the agriculture sector, the government has taken some steps. So steps taken to improve the situation, the steps are following. First, the government established of Indian Council of Agriculture Research, ICAR, means Indian Council of Research, means Agriculture Research. So it is a organization, it is a body which look after the means the cause of the agriculture decreasing, and the next thing that how to produce the more and more crops, and what are the regions that why the agriculture sector these are means lagging behind in comparison to other sectors, means like secondary sector or tertiary sector. एंड ये जो वर्क करता है, ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करता है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को मीन्स अपडेट किया जाए और कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को developed किया जाए. And the second thing, agriculture university is also opened by the government, so in that the people can get the knowledge about agriculture, and after getting the education, after completing their education, they again means they again give that knowledge to the different part of our country, so the farmers they get benefited, and according to that they can grow their crops. And another, veterinary and the services and the animal breeding centers also opened by the government for the development of the agriculture. And the next thing, horticulture development program also started by the government. And in the last lecture we have discussed that the weather bulletin services also provided for the farmers, means through televisions or radio, so that they can aware about the weather, or according to that they can plan according to their crop. So all these means steps were taken by the government to promote this agriculture sector, but still it is behind. See this table, it is given I think in your book also. If we talk about these are the sectors: agriculture, industrial, or you can say secondary sector, service sector, or you can say tertiary sector. And if we see their contribution, agriculture it is decreasing, industries it is increasing, if we talk about the service it is also increasing, and if we talk about the overall GDP of our country it is increasing, but the share of the agriculture it is decreasing. Okay, so this is the problem, and these steps were taken by the government also. But now also some challenges in front of our agriculture sector. So what are the challenges? The challenge, the international competition. Okay, the first challenge is to international competition. Now why international competition? Because सी जो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, कि जो उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो उसके साथ जो हमारा जो इंडियन प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, इंडियन क्रॉप्स को compete करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? सी अब ये जो challenges है कि international competition की our products, our crop production has to face the competition with other countries like Russia, USA and China, because they are अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि our crop production or our crop quality is not good or is bad quality. We earlier in the major crops also we have learned that the fine cotton is famous all over the world, and our coffee is also is known for its quality. So but here when we go in the market, suppose when you go in the market you see only two things ना. First is quality, कि जो हम चीज़ ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी देखते हैं. एंड सेकेंड वन प्राइस, कि उसका प्राइस कितना है. सो हियर ऑल्सो कि हमारी क्वालिटी तो गुड है बट प्राइस इज हाई इन कंपेरिजन टू दीज कंट्रीज. So due to that high prices our country has to face, means our agricultural crop or production has to face the problem, has to face the international competition in the market. Now the second thing, reduction in public investment, means जो public investment means government जो investment करती है that is also reduce in the agriculture sector in comparison to other sector like
डिफेंस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें थोड़ा सा कम हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, रिड्यूस इन सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि जो हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो सीड्स होते हैं, जिन पे जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो दिस इज द रीजन ऑफ द हाई प्राइस। सी, जो यूएसए है वहाँ पर क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत अच्छी सब्सिडी दी जाती है। सो उनको सब्सिडी दी जाती है तो उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, देन वो कम प्राइस पर अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती है, उसको सेल करते हैं मार्केट में। इन कंपैरिजन अगर हम अपनी कंट्री में देखते तो हमारी कंट्री में सब्सिडी कम दी जाती है, जिससे कि फार्मर्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। कॉस्ट इंक्रीज होती है देन तो उसको जो अपनी जो फूड क्रॉप्स है उसका प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है। सो दैट इज वाई द प्राइसेस आर हाई। सो लाइक दिस इन एनी दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल लाइक कि जैसे यूएसए में सपोज कि फार्मर है, फार्मर ने क्रॉप को ग्रो किया तो उसकी जो कॉस्ट आई 100 रुपीज़ आई, और जो यूएसए गवर्नमेंट है वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लाइक उसको 50 रुपीज़ सब्सिडी मिली तो उसकी जो कॉस्ट है वो अब सिर्फ 50 रुपीज़ रह गई ना। अब सपोज इसमें वो अपना बेनिफिट ऐड करे लाइक 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, मीन्स उसको 60 या 70 रुपीज़ में मार्केट में सेल करता है। तो उसकी जो फाइनल जो मीन्स जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, फूड क्रॉप है, उसकी जो प्राइस है वो कितना हुआ, 70 रुपीज़ मैक्सिमम। एंड इन कंपेरिजन सी इन इंडिया कि एक सेम फार्मर है कि उसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन जो कॉस्ट आई है वो 100 रुपीज़ आई है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ओनली 20 रुपीज़, तो उसकी जो कॉस्ट है फाइनल कॉस्ट है 80 रुपीज़। अब उसमें वो 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है, एंड आफ्टर एडिंग हिज प्रॉफिट कि वो उसको मार्केट में सेल करता है 90 रुपीज़ में। देन 90 एंड 70 द means difference is there na in their prices. Here prices are high and in that prices are less. So due to that the Indian food crops, the Indian agriculture sector, they had faced the problem in the means international. Okay, next thing, reduction in import duties. It is also next reason that why सपोज कि जो 1992 में जो लिबराइजेशन हुआ था, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट कि बहुत सारी ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया था, जो कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, और जिससे बेनिफिट किसको मिला था, जो ये बाहर की जो कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़। अब जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, अब इनमें क्या है कि एक तो फार्मर को सपोर्ट बहुत किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा कि उनके प्राइस लेस होते हैं। अब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रिडक्ट हो गई है, मीन्स कि जो हमारी कंट्री में अब आती है उनको इतनी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं, तो वो इजीली क्या करते हैं, दे सेल देयर क्रॉप्स और देयर प्रोडक्शन इन दी अदर कंट्रीज लाइक इन आर कंट्रीज ऑल्सो। तो उनके जो प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में आते हैं, बिकॉज उनको बहुत कम ड्यूटीज मीन्स टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब टैक्सेस तो कुछ है नहीं, पहले जैसे हाई टैक्सेस होते थे तो वो कम आते थे, अब उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो वो इजीली अपनी जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको सेल कर लेते हैं हमारी कंट्री में। सो दैट इज़ वाई कि जो हमारी कंट्री में, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंडियंस है उनको ये होता है कि डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ करें, और दूसरी चीज़ कि उनको लेस प्राइस पे जब बाहर की चीज़ मिल रही है, इम्पोर्टेड जो चीज़ है वो मिल रही है, तो उसको परचेज करेंगे वो। सो दीज आर दी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो दीज आर दी रीजन्स। फर्स्ट, द हाई प्राइस, ड्यू टू हाई प्राइस द इंडियन agriculture crops they face the problem international competition. Second, why the price are high, because our government provide less subsidies. अब less subsidies, अब ये see here one reason also was there is there कि जो यूएसए है इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, एंड सेकेंड थिंग कि वहाँ पे जो फार्मर्स है दे आर वेरी लेस इन नंबर। सो और इन आर कंट्री द फार्मर्स मोर देन हाफ मीन्स मोर देन हाफ पॉपुलेशन आर बिजी इन द एग्रीकल्चर ना, कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक ये तो वैसा एग्जाम्पल हो गया ना एक फैमिली में कि एक बच्चा है तो वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मीन्स अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर। और सेम दूसरी फैमिली में अगर 10 बच्चे हैं तो उनके ऊपर वो थोड़ा सा देख कर करेंगे ना इन्वेस्ट, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा करेंगे। एक जिसके पास एक है वो ज़्यादा कर पाएगा। एंड द सेम थिंग अप्लाई हियर ऑल्सो कि जो यूएसए वहाँ पर कम फार्मर है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उनका, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मर है तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। एंड द सेकेंड थिंग कि हमारी कंट्री यूएस कंट्री की तरह से डेवलप्ड भी नहीं है ना। सो दिस इज द रीज़न ऑल्सो दैट ड्यू टू दैट द आर गवर्नमेंट प्रोवाइड लेस सब्सिडी बिकॉज द फार्मर्स आर लार्ज इन नंबर. Okay, so these are the regions, these are the challenges in front of the
एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द वन मोर दैट इज द कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कम होता ही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड सिक्योरिटी. ओके, so about food security we have learned in the ninth class also. So now today also we will discuss about the food security. Now firstly, what is food security? Food security means to secure the food, to secure the food for the people. Okay, and in emergency, like in natural calamities like flood, earthquake. Okay, and drought, in that type of situation in emergency. To so what is food security? So food security means to ensure the food for all, to ensure the food for all in the emergencies or in any other case, or in the deficit areas means those are not able to purchase the crop at the market price. So that is why this food security, so it is the food, to secure the food for the all people in the country at the affordable price. So what is food security is clear कि food को secure करना for the people in the emergency or in the deficit areas. Next thing, why it is need, that why the food security is needed. See here the answer is this कि जो फूड सिक्योरिटी है वाई इट इज़ नीडेड, कि ऐसा तो नहीं है कि हर जहाँ पर जो डिफिसिट एरियाज़ हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं कि उनको फूड कैसे मिलेगा. अगर अफोर्डेबल रेट पर उनको अवेलेबल नहीं है, सो दे कैन नॉट परचेज ना एट हाई प्राइसेस और एट द मार्केट प्राइसेस. दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी जो इकॉनमी है उसकी डेवलपमेंट, इट डिपेंड ऑन दी हेल्थ ऑफ द पीपल, इट डिपेंड ऑन दी एजुकेशन ऑफ द पीपल. कि गवर्नमेंट जितना ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे इन्वेस्ट करती है, कंट्री उतनी डेवलप्ड होती है. बिकॉज जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, जो हेल्दी पर्सन होंगे, दे मीन्स दे कंट्रीब्यूट मोर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ना. इन द 9th क्लास वी रेड अबाउट दैट. सो हेल्दी पीपल होंगे तो वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब हेल्दी पीपल, हेल्थ के लिए हमें क्या नीड है, हमें सफिशिएंट फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस चाहिए. सो फॉर द प्रॉपर फूड, द गुड हेल्थ, फॉर द गुड हेल्थ द प्रॉपर फूड इज रिक्वायर्ड ना. and for the development of the country the good health is required. So for the development of the country these food security is needed. So it is clear that why food security is needed, because for the good health of the people, and good health is contributed in the development of the country. And the next thing, where where this food security is needed. Now the answer is in the deficit area, in the less developed countries, in the less developed states, in the less developed districts, or you can say in the less developed villages. कि जिन एरियाज में लाइक हमारे कंट्री में उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, कि जो लेस डेवलप्ड हैं, उन कंट्रीज़ में फूड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को एट दी अफोर्डेबल रेट पे मीन्स फूड प्रोवाइड करने के लिए द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दिस food security. Okay, so where it is needed, in the less developed areas. Okay, then now the next thing, how. Now the question is that how this food security is provided. And in the 9th class also we have learned this thing, that with the help of buffer stock and the PDS. Now what is buffer stock? एक स्टॉक मीन्स समझते हो ना कि चीज़ों को जब हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं स्टोर करके, और आने वाले टाइम में जब हम उनको यूज़ करते हैं. एंड हियर बफर स्टॉक मीन्स स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. कि ये बफर स्टॉक क्या है, कि जहाँ पर फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. इसमें लाइकली मीन्स सेम मोस्टली तो क्या आते हैं, हमारे राइस और वीट आते हैं. एंड फॉर दी पुअर, किन के लिए रखा जाता है, जो पुअर लोग होते हैं. और फॉर दी एमरजेंसी ऑल्सो एट अफोर्डेबल प्राइस, एट अफोर्डेबल प्राइस की जिसको वो अफोर्ड कर सके, मिनिमम प्राइस रखा जाता है उसके लिए. ओके, so buffer stock is the stock of food grains. So for the poor people, you can say for the emergency at the affordable price. Now the question is this, that in this buffer stock from where we purchase the food grains, means like wheat and rice.
then the answer is from farmers. Farmers ही खरीदेंगे ना, because farmer grow these wheat and rice. But now the question is this: how? And the answer, how it discussed we in the last lecture also, at MSP, means we purchase these food grains from farmers at MSP, minimum support price. Now what are minimum support price? In the last lecture also I told you that these are the price which are announced by the government before every sowing season, so that the farmers can grow their product, their crops according to that price. That if we grow these crops, means minimum we get from the government. Okay. And अकॉर्डिंग टू दिस कि बफर स्टॉक जो होता है क्रिएट किया जाता है, जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्टॉक जब यूज़ होता है तो जितनी उसमें कैपेसिटी होती है तो गवर्नमेंट उसके बारे में अवेयर रहती है कि हमारे स्टॉक में अब हमें इतना क्विंटल राइस लेना है या फिर इतना क्विंटल हमें वीट खरीदना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने एमएसपी को अनाउंस भी करते हैं. एंड other benefit the farm for the farmers also, means they can aware about the price of the crops now, and according to that they can do the production. And the next thing, so up to here it is clear. Buffer stock, it is the stock of food grains for the poor, and the second, from where we get the food grains from farmers, and how at the MSP, means minimum support price. And the next thing, now कि हमने buffer stock create कर लिया, foods को purchase कर लिया, but how we distribute these food to the needed person, or to the deficit areas, or to the below poverty line people, or to the emergency, means emergencies areas. Now the answer is with the help of PDS, public distribution system. In that you can add the ration shops, means the government open many ration shops in different areas, and the government provided the yellow card, the green card and blue card to the people. And in these cards we will, means we read about these cards in the 9th class also. So means the people are divided into below poverty line, above poverty lines. So according to that, the government, means distribute these food grains with the help of this public distribution system. So up to here it is clear that what is food security: to secure the food for the all persons. Next thing, why? Because for the good health the food is required. And the second thing, where the food security it is provided, where in the less developed areas, in the less developed districts or villages. And how it is means it is provided by the help of, means with the help of buffer stock and PDS. So buffer stock, it is a stock of food grains for the poor people, and from farmers we purchase the food grains at minimum price. And the next thing, that how we distribute these food grains in the people with the help of public distribution system, or with the help of ration shops, means in the ration shops, in the ration shop the person, they see the ration card now, and then at the minimum price, means per kg, means per kg 2 rupees or 1 rupees they give the ration, means they give the wheat and rice to the people, those are having the card, ration card. So all these things we have discussed about food security. Many points are left, so in the next video we will discuss. So up to here you will read all these points from your book. So today what we discussed, the first, the contribution, if we talk about less contribution but more contribution in employment. Okay. And the next, these are the steps those taken by the government. And if we talk about this table, so in the GDP the contribution of the agriculture, it is decreasing, because these are the challenges in front of the Indian agriculture. And the next thing, food security, we had discussed about this thing also. Thank you.